Okay, so let's discuss about the serology of hepatitis B viral infection. So as we have talked about, there are three different types of antigens, and then there are antibodies against those antigens in our body. So these three types of antigens is HB surface antigen. अगर ये present होता है, इसका मतलब क्या है? If it is positive, means the surface antigen it is positive, it means that there is an infection with this virus. Okay, that may be an acute or chronic, दोनों infections में हो सकता है, but अगर surface antigen positive है तो इसका मतलब उस person को infection है. The second type of antigen which we have seen in the virus is E antigen. So E, Ag for antigen. अगर ये serological testing में positive आता है तो इसका मतलब क्या है कि it has been observed when this antigen is present in the serum or blood, at that time the viral particles they are replicating very fast, so it shows that there is an increase in the replication of that virus, and of course अगर virus replicate करेगा तो वो infective होगा. तो अगर ये वाला एंटीजन ई एंटीजन पॉजिटिव है, in that case the virus is replicating very fast and also it is infective to the other cells, दूसरे cells को भी infection cause कर रहा है, and it is infective to the other person and other people as well. Then the third antigen, that is the core antigen. So we don't measure this core antigen, we used to measure the antibody which is against this core antigen. So in the previous graph you have seen कि यहाँ पर core एंटीजन जो है वो यहाँ पर नहीं ड्रॉ किया हुआ है, तो आप ये चीज देखोगे कि कोर एंटीजन एक्चुअली नहीं डिटेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं वो डिटेक्ट करते हैं और उससे जो है कंक्लूजन निकालते हैं कि वो क्या है, किस स्टेज में है डिजीज. ओके, so we don't measure the antigen which is associated with this core, that is core antigen was not is not measured in this case, and then there is another we consider it as an antigen, that is the DNA of हेपेटाइटिस बी वायरस. तो अगर डीएनए प्रेजेंट है और पॉजिटिव आ रहा है, यानी पीसीआर में पॉजिटिव आ रहा है, तो वो क्या इंडिकेशन शो करता है, वो ये भी इंडिकेशन शो करता है दैट वायरस इज रेप्लिकेटिंग very fast and also there increase infectivity. It shows that it is infectious to the other cells, infecting the other cells, and as well as to the person is at the infective stage. Okay, and then there are antibodies against these viral antigens. So what are the different types of antibodies we get to detect in the serum is that antibody against the surface antigen. So anti-HBs, if this comes positive, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन क्योर हो गया है या पर्सन जो है वो वैक्सीनेटेड है. अगर ये वाले एंटीबॉडीज किसी पर्सन में पॉजिटिव आते हैं तो उसका मतलब क्या है, द पर्सन इज बीइंग क्योर्ड और वैक्सीनेटेड. देन द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस कोर एंटीजन, सो anti-HBc. सो इफ दीज एंटीबॉडीज अगर किसी को टेस्ट करते हैं और ये एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव आते हैं, व्हाट एंटीबॉडीज, if the antibodies against this core antigen and of which type, that is IgM type, if it comes positive, then it means it is an acute infection. If it is positive, it means it is in chronic infections, if these type of antibodies is detected in the blood. Then the third type of antibodies is against this E antigen. If there is antibodies against this E antigen comes positive through the ELISA test or agglutination test or indirect Combs test, it means that the replication of the virus goes down. It means that immune system is capable of containing the virus, and also it shows that infectivity of the virus is also goes down. It is not infecting the other cells. अगर E antigen के against antibodies form हो जाती हैं, and that's how infection goes down.
इस तरह से जो है आप इस वाले ग्राफ में देखो, जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गए हैं तो इन्फेक्शन जो है वो नीचे चला गया, दिस ई एंटीजन। लेकिन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म कब होते हैं? बहुत लेटर ऑन फॉर्म होते हैं। हियर यू कैन सी दीज एंटीबॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग अगेंस्ट दिस। सो नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट हैपन if how to diagnose if the disease is in an active stage। तो अगर एक्टिव स्टेज में होता है तो क्या आएगा? अगर एक्टिव स्टेज में हो रहा है, पर्सन को इन्फेक्शन हो गया है, मे बी इन एक्यूट मे बी इन क्रोनिक, सो एक्टिव स्टेज में क्या होगा? So if the virus is active and it is in the acute phase, basically this is an acute phase, so acute phase को कैसे diagnose करेंगे? ये वाइवा में भी पूछा जाता है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर ये कंडीशन है तो आप क्या डायग्नोज करोगे पर्सन को? इफ द पर्सन कम्स विद दिस टेस्ट, उसका ये टेस्ट आता है पॉजिटिव, so what will be your diagnosis? So what is happening in the acute phase? उसको इन्फेक्शन हो गया, the person get infected, तो क्या क्या पॉजिटिव आएगा? एंटीजन, ऑफ कोर्स उसको अगर इन्फेक्शन हुआ है, वायरल पार्टिकल ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो सरफेस एंटीजन आपने देखे कि सबसे पहले एंटीजन आ जाएंगे ब्लड में। सो यू कैन सी the surface antigen that this guy, it is positive, it is the infection, either the acute infection or the chronic infection. So this is basically active, not this is acute infection. So we can see here acute infection में of course positive आएगा क्योंकि वही वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। What about this E antigen? Of course it is also coming positive because the virus is infected and start replicating within the system. Okay, what about this? This will also come positive, of course, replicating है, and then it should be positive. So the HPV is all the three antigens, they come positive, and we have already talked about this. We don't measure this antigen, we measure the antibodies against it. Okay, so if we talk about the antibodies, अगर हम antibodies को देखें acute phase में तो क्या होता है? Acute phase में I told you that these against the एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सरफेस एंटीजन वो कब अपीयर होती हैं? या तो क्योर्ड हो जाए या वैक्सीनेटेड हो जाए। यहाँ पर क्या हुआ है? ना तो क्योर है ना वैक्सीनेटेड है, एक्यूट फेज में। इसका मतलब क्या होगा? ये एंटीबॉडीज जो है, अगर इसका टेस्ट यहाँ पर किया जाए जब एक्यूट इन्फेक्शन है किसी पर्सन को, तो उसके ब्लड में या उसके सीरम में ये एंटीबॉडीज नहीं होंगी। ये एंटीबॉडीज कब अपीयर होती हैं? यानी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट जब पर्सन जो है वो या तो क्योर हो गया या वैक्सीनेटेड हो गया, सो ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा। What about the antibodies against? अब हम, as I have told you, we see the antibodies against this core antigen. So here you can see, and acute infections में IgM, of course IgM antibodies they appear before IgG, so IgM positive आ जाता है. And what about the anti-HBe? So it appears later on. These antibodies और acute phase में है, it is still dividing, so we don't have any antibodies against this E antigen. Okay, E antigen कब आएगा? Antibodies against this E antigen, if they appears, it means there is a slow in the replication, the infectivity to the other cells is also decreasing. So here in the acute phase it comes negative, which means that still the body hasn't formed the antibodies against this antigen, that is the E antigen, and the virus is causing this acute disorder. So that's how they identify it. ये serology देख करके, क्या serology देख करके कौन से antigen positive है और उसके against कौन से antibodies form हुए, they'll get to know. Okay, and the person is diagnosed with an acute infection which is resolved. Okay, this is known as a window phase. विंडो पीरियड में क्या होता है? विंडो पीरियड में आफ्टर 2-3 months इन्फेक्शन हो गया एंड उसके बाद देन व्हाट इज हैपनिंग? सो दिस हैपेंस आफ्टर 3 months, 3 to 4 months के अराउंड क्या होता है? सो हियर यू कैन सी 3 to 4 months के अराउंड हियर अगेन दिस बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडी। तो मेन एंटीबॉडीज क्या बन रहे हैं जब एक्यूट इन्फेक्शन हो गया? तो आप ये देखो कि एंटीबॉडीज क्या बन रहे हैं, बेसिकली बॉडी जो है वो कैसे क्लियर कर रहा है इन्फेक्शन को। सो एक्यूट से रिकवरी कैसे हो रहा है? सो हियर यू कैन सी दिस गाय, बेसिकली दिस इज द मेन component which help in bringing down the infection, IgM. So IgM, it help down in bringing all the infections. So that's why the viral particle, the viral antigens, it comes negative during the window phase because it is able to contain the replication of the virus, IgM antibodies. ठीक है? So IgM antibodies
जब वर्क करते हैं, so that's why all the other antigens which we are talking about, that is surface antigen, it comes negative during the window period. It means infection is going down. And E antigen, it is also coming negative. And ऑफ कोर्स अगर ये दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ऑफ कोर्स वायरस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस आईजीएम एंटीबॉडी बीन प्रोड्यूस्ड. सो आइदर इट विल बी नेगेटिव और वेरी लो, इट इज नॉट डिटेक्टेबल. सो दैट इज हैपनिंग इन द विंडो पीरियड. व्हाट अबाउट द एंटीबॉडीज? ऑफ कोर्स अब क्या हुआ विंडो पीरियड में, आफ्टर 5 months, 4 or 5 months के बाद, हियर यू कैन सी अगेन सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट अभी भी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं फॉर्म होते हैं विंडो पीरियड में भी. दे अगेन टेक सो मच ऑफ टाइम टू डेवलप. एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस कोर एंटीजन? हमने देखा acute phase में it is still the IgM. Now they are promoted, these IgMs, they are now promoted to the IgG antibodies, and we get the titer of these two within the window period. And because of this, these development of these antibodies, we are able to get these down. Antigens का जो concentration है वो नीचे चला जाता है. ठीक है. And again here we still see that there are still no antibodies were secreted against this antigen. तो खाली window period, recovery period, विंडो पीरियड और एक्यूट इन्फेक्शंस में सिर्फ कौन सा एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है? बेसिकली दिस एंटीबॉडी इज बीइंग डेवलप. सो क्या कहते हैं, फुली रिकवर होने के लिए अभी क्या रह गया, जब तक एंटीबॉडीज इस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट नहीं फॉर्म होंगे तब तक जो है रिकवरी नहीं होगी. दैट मे लीड टू दी, अगर वो नहीं फॉर्म हुए एंटीबॉडीज, दैट में लीड टू दी क्रोनिक इन्फेक्शन. अगर फॉर्म हो गए तो रिकवरी हो जाएगी. सो हियर यू कैन सी विंडो पीरियड के बाद क्या दो सिचुएशंस हो सकते हैं, क्या दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग, इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट फेज में इन्फेक्शन हुआ, ये सारे जो है द आईजीएम एंटीबॉडी डेवलप हो गई, एंड दैट में लीड टू द रिडक्शन इन द वायरल पार्टिकल्स, एंड दैट इज नोन एज अ विंडो फेज. बहुत कम हो गया, टाइटर, लेकिन वायरस अभी भी है. So what is happening is that after that window period, there may be two possibilities depending upon the person's health condition. रिकवर हो जाएगा या क्रोनिक हो जाएगा, जो पॉसिबिलिटीज हमने पढ़े थे. ठीक है. तो रिकवर किस फेज में हो जाएगा, और जब रिकवर हो जाएगा तो उसकी सीरोलॉजी कैसे है, और क्रोनिक अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको उस केस में क्या होगा. सो इफ इट गेट रिकवर्ड, तो रिकवर्ड हो जाएगा ऑफ कोर्स, तो कोई भी एंटीजन उसके ब्लड में नहीं डिटेक्ट होगा. So here you can see negative surface antigen, E antigen is negative, and of course DNA is not detected. And what is happening with the surface antigen? Now here you see which happens after 6 months. 6 महीने बाद antibodies develop होते हैं against the surface antigen. तो जब ये develop होते हैं, this is basically the main soldier in fighting this disease, in fighting this infection. जब तक surface antibodies form नहीं होते हैं, recovery नहीं होती है. So they form very late in the infection after 6 months. So here you can see antibodies now created against this antigen, that is HPS. This is now positive, जो अभी तक negative आ रहा था. आप देखो acute में भी नहीं थे ये antibodies, window period में भी नहीं थे antibodies. Recovery phase में the person get positive for these antibodies, which indicates the person is recovering from this acute phase. तो अगर ये serological testing में ये results आते हैं, the person is in the acute infection phase. अगर ये results आते हैं, the person may be in a window period. And अगर ये results आते हैं antigen और antibodies का, no antigens, antibodies it may found positive for the surface antigen, then the person is recovering. And of course antibodies against this core antigen is again positive, will come positive, and that is of IgG types, because later on the IgM is promoted to the IgG, and maybe both और IgM भी present होंगे. ठीक है. So here you can see IgG antibody type is present during the recovery phase, and the person is immune to the disease. What about this anti-HB? We are not talking about this. Again, it is more important in case of the chronic infections. So diagnosis में इसकी इतनी importance नहीं है during the recovery phase. So we are not talking about this antibodies against these this antigen, that is E antigen. Okay.
तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, इम्यूनाइज्ड हो गया पर्सन। अगर उस पर्सन को, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी इम्यूनाइज्ड विद द हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इम्यूनाइजेशन के केस में भी द सेम टाइप ऑफ सीरोलॉजी वी कैन ऑब्जर्व एंड कैन बी डायग्नोज वेदर द पर्सन हैज बीन इम्यूनाइज्ड। सो अगर इम्यूनाइजेशन हुआ है तो क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन में यू नो कि वैक्सीन क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ वायरस और अ बैक्टीरिया। सो इस केस में जो वैक्सीन होती है, इट ओनली कंसिस्ट ऑफ ओनली द सरफेस एंटीजन। कौन सा एंटीजन होता है, सिर्फ सरफेस एंटीजन दिया गया है। तो सरफेस एंटीजन दिया गया है, ऑफ कोर्स देयर विल बी, अगर पर्सन इम्यूनाइज्ड है तो इन्फेक्शन अगर उसको होगा भी तो फिर देयर शुड बी नो वायरल पार्टिकल। सो हियर नो एंटीजन, एनी ऑफ द एंटीजन, चाहे सरफेस हो, चाहे एनवेलप ई एंटीजन हो, चाहे डीएनए हो, nothing will be detected in the person's serum or blood sample. What about the antibodies? Antibodies कौन से डिटेक्ट होंगे? ऑफ कोर्स अगर आपने सरफेस एंटीजन दिया है वैक्सीन में तो उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी डेवलप होंगे। सो हियर यू कैन फाइंड दैट इट इज पॉजिटिव, दैट इज द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द surface antigen will be positive in those persons which are immunized with this virus. What about this antibodies against the core antigen? Of course कभी इसको infection हुआ ही नहीं तो ये negative आएगा. That's how the doctors they can identify between the recovery and the immunization, that it is comes negative because उसको कभी इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज उसके ब्लड में कभी होंगे ही नहीं, और उसको इन्फेक्शन होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसके पास, उसको इतना टाइम नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव एंटीबॉडी उसके सरफेस के अगेंस्ट है, उसके बॉडी में ऑलरेडी है, तो इट विल नॉट अलाउ द वायरस टू इवन डिवाइड, यू वोंट गेट द इन्फेक्शन. Okay, and again we are not talking about the antibodies against this e antigen because that is more important when we are diagnosing the chronic disease. Okay, so this is the one possibility, the person get recovers or the person get immunized. What happens when the acute infection it leads to the chronic infections? तो क्या होता है उस केस में सीरोलॉजी कैसी होती है उसकी? सो इफ यू लुक एट द दो बोथ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ऑफ कोर्स क्रोनिक है तो इन्फेक्शन तो है तो सारा पॉजिटिव आएगा ही आएगा एंटीजेंस, क्योंकि वायरस तो प्रेजेंट है और डिवाइड भी हो रहा है बहुत एक्टिवली. सो हियर यू कैन सी देयर आर टू स्टेजेस ऑफ क्रोनिसिटी वी हैव टॉक्ड अबाउट. वाले ग्राफ में हमने, वाले डायग्राम में हमने देखा था कि आइदर द वायरस इज डिवाइडिंग वेरी फास्ट, रेप्लिकेशन हो रहा है, और क्रोनिक स्टेज में इट इज स्प्रेडिंग, प्रोग्रेसिव है. क्रोनिक स्टेज प्रोग्रेसिव है, यहाँ पर नॉन प्रोग्रेसिव क्रोनिक स्टेज है. द वायरस इज नॉट रेप्लिकेटिंग. So non-replicative chronic stage and the replicative chronic stage. So of course infection है तो सारे antigens, if you look at the antigens here, तो antigens तो आएंगे ही सारे positive. Surface antigen positive, E antigen positive, HBV DNA is positive. Okay, तो अगर ये positive है, what about the antibodies? As we have told you, यानी अगर उसको क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है, इट सेल्फ सेज कि सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही नहीं हुए. अगर ये प्रोड्यूस हो जाते तो ऑफ कोर्स रिकवरी हो जाती है ना. वो क्रोनिक इट वुडंट लीड टू द क्रोनिक इन्फेक्शंस, राइट. अगर एंटीजेंस अगर एंटीबॉडीज सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट बन जाते, वो वायरल पार्टिकल को डिवाइड ही नहीं होने देते और इन्फेक्ट नहीं करने देते दूसरे सेल्स को, फ्रेश सेल्स को. सो द डिजीज विल नॉट कंटिन्यू टू द क्रोनिक. सो क्रोनिक अगर किसी को है तो ऑफ कोर्स there are no antibodies against the surface antigen. अगर उसके अगेंस्ट आ गई हैं इसका मतलब वो पर्सन रिकवर कर गया है और एंटीजेंस नहीं होंगे उसके अगेंस्ट, उसके ब्लड में. What is happening to the core antibodies? So they come positive. Of course they come positive, but they are not able to sufficient to bring down this infection. That's why they are still positive and chronic हो रहा है. Body is trying to, the immune system is trying to fight back. It's not like that कि वो चुपचाप बैठा रहेगा. Of course, they are trying to do that, but it is not sufficient. That's why the acute infection leads to the chronic rather than a recovery. That's what is happening is, it is not sufficient enough, but the serology will come positive. There will be definitely the antibodies. And since the chronic infection, it occurs more than 6 months, so antibodies किस type के होंगे? IgG type के होंगे as compared to the IgM. There will be no, in acute phase, there is IgM antibodies, but what is happening in the chronic phase? They are of IgG types, right? What is happening to the antibodies against this antigen? They will also come negative. यहाँ पर हम मेजर करते हैं तो ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर है कि रेप्लिकेशन क्रोनिक स्टेज में द वायरस इज रेप्लिकेटिंग और नॉट. सो दिस एंटीबॉडी हेल्प्स टू diagnose that. So it comes negative when it is replicating.
ओके, सो नेगेटिव मीन्स अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज नहीं है. ऑफ कोर्स द वायरल इज रेप्लिकेटिंग बिकॉज इट इज रेप्लिकेटिंग. सो that's why it is replicating because the antibodies are not still formed for this antigen. What is happening in non-replicative chronic infections? So chronic infections हैं मतलब लेकिन replicate नहीं कर रहा वायरस. Okay, so chronic infections है, virus is still there. Surface antigen of course will come positive. E antigen is of course, this is what if you look at it comes negative. Why it is coming negative here? If you look at this, it is an indication of a replication and infectivity. Virus is there but it is not replicating. तो जब वायरस रेप्लिकेट होता है तभी ये एंटीजन रिलीज होता है वायरल पार्टिकल से. अब यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, क्रोनिक इन्फेक्शंस है. It may lead to the chronicity, but it is not replicating. It is indicating that, of course, the disease is progressed to the chronic stage, but now at the chronic stage, it is not replicating. So negative आ जाता है यहाँ पर. And of course, it is not replicating. So HPV DNA is negative, but the doctors they get to know that this surface antigen is positive. इसका मतलब वायरस है अभी बॉडी में, क्लियर नहीं हुआ है बॉडी से. It damaged the liver cells and it is still persisting even after the 6th month. Damage enough to come into the category of the chronic stage. Okay, what is happening with the antibodies during this stage? Again, surface antigen है ही नहीं, surface antibodies है ही नहीं. That's why it leads to the chronic stage. As simple as that. अगर ये होते तो रिकवरी हो जाती, right? अगर एंटीबॉडीज सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट बन जाते तो रिकवरी हो जाती. But since they come, that's why they come negative. What about the anti-HPC? Of course, they will be present because the system is again fighting, so you'll get a positive IgG. What is happening here? Why it is now non-replicating? So it is because these antibodies are developed in this chronic stage. That's why the chronic stage is now at able to, of course, the disease at a chronic stage, but with the development of these antibodies that is against the E antigen, it comes positive. That's why it is not, the virus is not able to replicate because the development of these antibodies. So 6 महीने बाद अगर disease progress कर जाती है, it may lead to the chronic stage where the virus is replicating because that person is not able to even form these antibodies. ना ये antibodies हैं surface की, ना ही उसके पास antibodies against this antigen है, that is an E antigen which is released when the virus is replicating. So acute infection, it lead to the chronic infection, but it lead to the chronic infection because the body is not able to form the virus, the antibodies against the surface antigen, but it is able to form the antibodies against this E antigen. So that's come positive. That's how it is. The virus is not able to replicate though. Okay. So that is a chronic non-replicative stage. So this is about the whole chart which tells about the diagnosis of the stages of the hepatitis B infection. ठीक है. So थोड़ी सी complicated है इसकी serology, but शायद आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए इससे. तो इस तरह से डायग्नोसिस करते हैं और इस तरह से जो है फिजिशियंस जो है वो पकड़ लेते हैं कि किस स्टेज पर इन्फेक्शन है. So this is again the same graph which is showing the acute HPV infection with a recovery phase and a window period serological responses. Recovery phase में क्या होता है और window period में क्या होता है serum level में titers अगर देखते हैं. So here you can see again this is the same graph. This is for your understanding purpose in brief. Summarize अगर हम उसको करेंगे तो acute infections जब होते हैं तो of course viral infection हुआ. Here you can see the antigen, which type of antigen, surface antigen सबसे पहले आ जाता है ना. What about this magenta line? It is a total, and then what appears, इसके against antibodies नहीं form होते हैं. Surface antigen आ गया पर उसके against antibodies नहीं form हुए. किसके against antibodies form हुए? दूसरा antigen होता है, that is the core antigen. उसके against the antibodies is formed. सबसे पहले IgM आते हैं तो IgM उसके साथ ही आए. Okay, and then of course IgG antibodies develop. So this shows the total antigen, that is IgM and IgG type. They are being developed. जैसे ये develop हो जाती हैं antibodies core के against, they will not allow the
द पार्टिकल टू असेंबल, क्योंकि कोर ही नहीं बन रहा है, ये एंटीबॉडीज कोर बनने नहीं दे रही है, सरफेस एंटीजन बना भी लो नए पार्टिकल्स, करेंगे क्या करके? सो दैट मे ब्रिंग डाउन द वायरल लोड, वायरल पार्टिकल कम हो गया। ओके, देन इट लीड्स टू द विंडो पीरियड जहां पर देयर इज एब्सोल्युटली नो डिटेक्शन ऑफ दीज एंटीजेंस thanks to this total antibodies. This is a window period recovery. And then after that, there is an itne after 24 weeks, that is 5 to 6 months here you can see, the antibodies against this recovery phase when the person it get recovers. So antibodies against the surface antigen form and the person is now immune for the lifetime. So that is the serology and the recovery of the patient infected with the or person infected with the HPV virus. Okay, so this is the significance of HPV seromarkers कि ये वायरल मार्कर्स हैं और डिफरेंट फेजेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो सरफेस एंटीजेंस अगर डिटेक्ट होते हैं that may indicate an acute infection. Okay, if persist for more than 6 months तो chronic infections में convert हो जाएंगे। Antibodies against the surface antigen, they are always protective by natural infection or by vaccination. We have studied कि antibodies against surface antigen जैसे ही बन जाते हैं the person, it means it is recovered or vaccinated है। So antibodies against this core antigen, we have studied there are two type of, अगर IgM present है तो acute infection है, अगर IgG present है ये वाली एंटीबॉडी it it may indicate a past infection और chronic infection, chronic में फॉर्म होते हैं। अगर E antigen present है, so E antigen मैंने कहा कि कब रिलीज होता है, एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन हो रहा है and there is a high chance of transmittability if this E antigen is present and positive. अगर एंटीबॉडीज अगेंस्ट ई एंटीजन बन जाते हैं तो ऑफ कोर्स डिजीज इज रिकवरिंग, अगर नहीं बनते हैं तो क्रोनिक है और रेप्लिकेटिंग है वायरस। व्हाट अबाउट दिस डीएनए, अगर डीएनए पॉजिटिव आता है विच indicate that active viral replication and high chance of transmit. So this is the whole summary of what we have discussed till now. Okay class, ठीक है? तो अगर I know it is very confusing, so if you are interested in understanding it you can ask me if you have any confusion, और अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जी। मैम आपने एंटीबॉडी और मतलब एंटीजेंस वाला बताया था मैम, वो तो एलाइजा टेक्निक से होता है ना, इंटरेक्शन देखते हैं, आपने पीसीआर क्यों बोला? सॉरी आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चे बोलो, फिर से बोलो, क्या पूछ रहे हो? मैम आपने एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए बोला था ना, तो मैम वो तो एलाइजा टेक्निक में होता है ना, आपने पीसीआर क्यों बोला? एक मिनट बेटा, गड़बड़ हो गया मेरे हेडफोन, इट इज नॉट कमिंग थ्रू माय हेडफोन। मैम वो कह रही है कि आपने एक मिनट बच्चे, एक मिनट बच्चे, एक मिनट just a second, I'm not able to hear through my headphone, what is happening? फिर से बोलो एक बार, yes speak। मैम आपने एंटीजन एंटीबॉडी एक मिनट बच्चे, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ सिर्फ बोलो, हेलो बोलो, क्योंकि मेरे सिस्टम में मुझे हेडफोन से नहीं सुनाई दे रहा है। आई एम एबल टू हियर फ्रॉम सिस्टम, जस्ट वेट अ मिनट फॉर योर क्वेश्चन। हाँ बोलो, गड़बड़ हो गया हेडफोन, हो गया। हेलो मैम, फिर से हेलो बोलो, हेलो टेस्टिंग माइक, हेलो हेलो मैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैम आवाज आ रही है मुझे, मेरे सिस्टम से आ रही है, एक्चुअली मेरे हेडफोन में नहीं आ रही है। चलो अभी सिस्टम कर दें, मैं चैट बॉक्स में लिखूं? नहीं बोलो, आ रही है आवाज, पर हेडफोन से ज्यादा अच्छे से मुझे सुनाई दे जाता है ना, क्लियर होता है, डिस्टर्बेंस आता है अदरवाइज। बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम आपने अभी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से बताया था ना कि कैसे डिटेक्ट करते हैं, कौन से स्टेज में है अभी और कैसे क्योर हो सकता है। आपने अभी बोला कि वो पीसीआर टेक्निक्स है, बट मैम ये तो एलाइजा टेक्निक में होता है ना, एंटीबॉडी। हाँ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एलाइजा टेक्निक से होता है, हम उसको एज एन एंटीजन ही मान रहे हैं। एंटीजन मींस इट इज पॉजिटिव, कमिंग पॉजिटिव, वी आर नॉट
HPV DNA अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको देख बेटे मैम पीसीआर आपने से ही रहे पीसीआर हैं। टेक्निक में बोला था ना। नहीं नहीं, पीसीआर में हम डीएनए देख रहे हैं बेटा। ये एलाइजा से हम क्या कहते हैं, एलाइजा से हम वायरल पार्टिकल के जीनोम थोड़े ना देख सकते हैं। अगर मैंने बोला होगा तो मैंने गलती से बोल दिया होगा, ठीक है। सो हियर ओके इट इज रिटन ओवर हियर कि वो पॉजिटिव आएगा जब हम पीसीआर करेंगे। जैसे यहाँ पर जहां भी ये लिखा है कि एचपीवी डीएनए पॉजिटिव है, इट मीन्स वो वहां पर पीसीआर किया गया है, उसका पीसीआर से चेक किया गया है। तो जहां भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वहीं पर होगा जहां रेप्लिकेट कर रहा है वायरस, राइट। सो यहाँ देखो एक्यूट में ऑफकोर्स पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है विंडो पीरियड में क्योंकि नीचे चला गया है सारा। रिकवरी में भी नेगेटिव होगा, इम्यूनाइजेशन में भी नेगेटिव होगा, एज सिंपल एज दैट। क्रोनिक इन्फेक्शन रेप्लिकेशन हो रहे हैं तो वो नेगेटिव आता है। नॉन रेप्लिकेटिंग में सॉरी क्रोनिक रेप्लिकेशन में पॉजिटिव है और नॉन रेप्लिकेटिंग में नेगेटिव है, क्योंकि नॉन रेप्लिकेटिंग है। जहां पॉजिटिव वहीं आएगा जहां वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, तभी वो डिटेक्टेबल होगा, राइट। सो बट वी आर नॉट यूजिंग दी अलाइजा फॉर डिटेक्टिंग। हम अलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी से करें, करेक्ट। अगर मैंने बोला तो मे बी गलती से बोला होगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें बोल रही हूँ मैं, मे बी माई मिस्टेक अगर मैंने यस। बोला है। बट अदरवाइज पीसीआर से आप एंटीजन एंटीबॉडी नहीं करते हैं, अलाइजा से करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। वी आर डूइंग अ पीसीआर टू लुक एट द वायरल लोड बाय looking at the copies of the RNA or the DNA of the virus, right? No problem in that. यस मैम। So this is the whole HPV वायरस का जो है वो इन्फेक्शन। इतना ही था, ये बस इतना ही है हेपेटाइटिस में। बी इज इम्पोर्टेंट, और बी को बी ही समझने में कॉम्प्लिकेशन है, और बी ही हर जगह आपको एक्सप्लेन किया जाता है, बिकॉज अदरवाइज अदर वायरल पार्टिकल्स आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या कहते हैं सिस्टम नहीं प्रेजेंट करते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना, उनके स्टेजेस आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। बट दिस इज अ ट्रिकी पार्ट, बिकॉज उससे जिस तरह से वो वायरस पार्टिकल जो है जिस तरह से इन्फेक्ट करता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो डिफरेंट है बाकी लोगों बाकी पार्टिकल से, बाकी वायरसेस से। ओके, so management of the hepatitis B infection, management will remains the same. That is the treatment, supportive treatment. We are not talking about the supportive treatment. Of course, आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन अगर होते हैं, अभी भी हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, so we give interferons, okay, interferons देते हैं एंड एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। सो ऑफकोर्स अगर एंटीवायरल ड्रग या इंटरफेरेंस दे रहे हैं तो वो कैसे इंटरफेयर करते हैं, वो दे आर इंटरफेयरिंग विद द रेप्लिकेशन ऑफ द पार्टिकल, एंड हाउ दे आर इंटरफेयरिंग विद द रेप्लिकेशन ऑफ द पार्टिकल, दे आर बाइंडिंग टू द एंजाइम्स। बेसिकली एंजाइम्स को ही टारगेट करते हैं, या फिर किस चीज को टारगेट करते हैं, ये टारगेट करते हैं कि जो आरएनए है वो होस्ट की मशीनरी से बाइंड नहीं कर पाए। कहाँ से नहीं बाइंड कर पाए? राइबोसोम से नहीं बाइंड कर पाए, तो अपने नए प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज कर पाए, राइट। सो उनके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, और इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना ट्रीटमेंट या ड्रग के बारे में, कि कौन से ड्रग्स होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज के बारे में वी हैव टू नो अबाउट। तो द मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वही, उसी को प्रिवेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल एबल टू प्रिवेंट द डिजीज। जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है उसको रोक दो तो प्रिवेंशन हो जाएगा। सो से क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से आता है, सो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेफ सेक्स, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शंस, दे मतलब डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्सन कि करना है, जरूरी है या नहीं जरूरी है। मदर को है अगर इन्फेक्शन तो चांसेस हैं कि बेबी को हो जाए, तो सिजेरियन सेक्शंस आर more safer than the normal delivery during that time. So they can prevent the mixing of the blood with the fetus. So वो है एक। And of course preventive measures में vaccines है, because vaccines are available for A and B combined vaccines. So that is a preventive strategy. Prophylaxis HB hepatitis B immunoglobulin after accidental exposure अगर हो जाए और लगे कि हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, तो उस टाइम एंटीबॉडीज भी दिए जा सकते हैं अगेंस्ट दी एंटीजन। फॉर एग्जांपल निडल स्टिक इंजरी इन केस ऑफ दोज हेल्थ वर्कर्स जो हेल्थ फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए ये, नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं है। नॉर्मल लोगों के लिए जिनको हो सकता है, जो एट रिस्क पर हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। तो जनरली पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत स्प्रेड होता था ये,
उस टाइम बिकॉज पता नहीं था कि दैट इज दिस वायरस इन 80s एंड 90s में इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई नाउ अ डे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इतना ज्यादा नहीं होता, बट ब्लड ट्रांसमिशन इनिशियल में बहुत एक बड़ा मोड था ट्रांसमिशन का ये वायरस के। ओके, बट nowadays it is an essential thing to test for all these tests before the before taking the blood, है ना। ब्लड को स्टोर करने से पहले तो सारी टेस्टिंग होती है ये ब्लड में, और एचआईवी की और हेपेटाइटिस की होती ही होती है। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपको रेड क्रॉस सोसाइटी वाले फ्री में आपका ये रिपोर्ट दे देते हैं, ये वाला रिपोर्ट्स, इन्फेक्शन है या नहीं है हेपेटाइटिस का, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ओके, so this is a preventive strategy. What are the complications associated with the disease? It may lead to the cirrhosis and hepatocellular carcinoma. We have discussed that. And why it may lead to the hepatocellular carcinoma? We have discussed that because it is integrated into the host cell. Other viruses, they do not integrate with the host cell because it integrated, the DNA get integrated with the host cell and then divide there, use that machinery. The other viruses, they use the protein machinery, but they do not integrate their genome to the genome of the host cell. तो वहां पर नहीं होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो कार्सिनोमा हेपेटोस कैंसर कॉज कर सके। ठीक है, सो आई थिंक यहीं तक हम करते हैं आज। आई लीव यू टिल हियर हेपेटाइटिस बी, आज बहुत एक लेंदी टॉपिक था, एंड इन द नेक्स्ट क्लास और मे बी इन द प्रैक्टिकल क्लास आई विल कवर दिस हेपेटाइटिस अदर वायरसेस। इट विल जस्ट टेक हाफ एन आवर or 20 minutes to cover, and now nothing is left since we have already discussed the methods of diagnosis and the transmission methods, so they are very much similar to each other, same techniques, same diagnostic tools are used. Okay class, so I'll stop here and I'll resume in the next class, maybe in the theory or maybe in the practical class. I have uploaded videos regarding this